Welcome to our class Deep Insights. So today we are discussing about communicative English ର AEC English जोटा compulsory ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେ ସେମ୍ syllabus ଅଛି। ତ यूनिट 1 ର ଆମେ first bit ପଢିବା जोटारे ଦେଇଛି what is communication। ତ what is communication ଆପଣ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି communication ମାନେ କଣ ହେଇଥିବ communication ର ओडिया को तो ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ବୋଲିକା କହିଥାଉ ହେଲା। ତ communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇडिଆ ଓପିନିଅन ଇମୋସନ ଯେତେବେଳେ ट्रांसफर होता है ताकू ही कहते कम्युनिकेशन। इन सिंपल आम कम्युनिकेशन रो संज्ञा लिखिले तो तापर आसुची एनकोड। एनकोड कौन थॉट इनटू साइंस सिंबल्स लैंग्वेज टेक्स्ट और गेस्चर्स हला एई माध्यम रे हमें एनकोड करथाउ। तो एनकोड गला देन आसुची एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन: sender, receiver, message, medium or channel, then encoding, decoding, last one is feedback। So at first we discuss about sender। The communication process starts with the sender, which is the person or group that wants to transmit the message to another person or group। তাহলে সেন্ডর কোন করে দি কমিউনিকেশন ইজ এ প্রসেস। কমিউনিকেশন হচ্ছে গোটে প্রসেস স্টার্ট উইথ দি সেন্ডর। তাহলে সেন্ডর থ্রু রে হি কমিউনিকেশন প্রসেসটা স্টার্ট হইতায় which is the person। सेंडर गोटे पर्सन और ग्रुप that wants to transmit जाकि किछि मेसेज ट्रांसफर करता है अनदर ग्रुप को हेई पारे और पर्सन को हेई पारे। तो सेंडर गला देन आसुची रिसीवर। the person or group who perceives or understands the message and attaches some meaning to the message is the receiver। ताले the person or group may be person हेई पारे मे बी ग्रुप हेई पारे who perceives जे कि बुझी थांती the message हला message and attaches message टा किए पठाई थाए सेंडर पठाई थाए and बुझी थाए कि receiver receiver बुझी थाए the message and attaches some meaning to the message is the receiver। ताले मीनिंग अटैच करता है कि मेसेज रे रिसीवर मीनिंग बुझी थाए होची इज द रिसीवर। तापर होची कोन मेसेज। आमे फास्ट जानले सेंडर तापर जानिले रिसीवर तापर थर्ड पॉइंट रे आछी मेसेज। मेसेज कोन जानिबा the physical form of the idea or information। ताले physical form of idea or information conveyed which can be understood through the receiver's sensory receptors hearing, seeing, smelling, feeling and touching। Messages are not the meanings but indicative of meanings। ताल से कौन कहला मेसेज र फर्स्ट पॉइंट कहूची the physical form of the idea or information conveyed which can be understood through the receiver's sensory receptors। ताले मेसेज दिए किए सेंडर दिए कहा को दिए रिसीवर को दिए। ताले मेसेज का को कहा जाए the physical form of the आइडिया और इनफॉरमेशन जहाटा आइडिया तार फिजिकल फॉर्म को ही बा इनफॉरमेशन को कहा जाए मेसेज कन्वेड व्हिच कैन बी अंडरस्टूड जोड़ा को अंडरस्टूड थ्रू द रिसीवर सेंसरी रिसेप्टर्स। ताले ताकू रिसीव करता है बुझी थाए बा रिसीव करता है सेंसरी रिसेप्टर्स हमर किए गया जाते हियरिंग सीइंग स्मेलिंग फाइव सेंसेस जाजन जोड़ा हियरिंग सुनी थाउ देखी थाउ स्मेल करथाउ फील करथाउ टच करथाउ सेंसरी रिसीप्टर्स द्वारा मेसेज टा रिसीवर टा रिसीव करी थाए। तापर से कहला कि मेसेजेस आर नॉट द मीनिंग्स बट इंडिकेटिव ऑफ मीनिंग्स। ताले मेसेज गुडा को अर्थ प्रकाश करन थाए रिसीवर जहा बुझी थाए से हिसाब रे अर्थ प्रकाश करथाए मेसेज हला।
इंडिकेटिव इंडिकेशन द्वारा माने किसी सिंबल द्वारा बुझाई थाए ताकू रिसीवर जो वे रे बुझी थाए से ही तार अर्थ बाहरी थाए। तापर आछी फोर्थ रे आछी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन रे मीडियम और चैनल। चैनल और मीडियम इज द मेथड vehicle used to transmit the message। ताले जो बाट देकी जो vehicle देकी जाई थाए कौन मेसेज ट्रांसमिट होता है ट्रांसफर होता है हला ताकू ही कहती मीडियम और चैनल। एग्जांपल होउची मीडियम और चैनल टेलीफोन लेटर्स ईमेल मेमोज हला एई माध्यम रे हमर मेसेज गुडा को ट्रांसफर बा ट्रांसमिट होता है हला। तापर encoding encoding is putting the meaning of message into appropriate words symbols gestures or other forms of expression for the purpose of sending an intentional message। ताले encoding encoding is putting the meaning of message into appropriate words। ताले आमर जो मनर भावना थाए आमे ताकू जदि लिखित रूप रे लेखिलु ताकू एनकोड ताकू एनकोडिंग को आगला सिंबल्स और गेस्चर्स और अदर फॉर्म्स विभिन्न प्रकार रूप रे एनकोडिंग हेइताय। एप्रोप्रिएट वर्ड्स थाए वर्ड्स माध्यम रे एनकोडिंग हेइ परिबो सिंबल्स माध्यम रे एनकोडिंग हेइ परिबो। तापर गेस्चर्स गेस्चर्स कहले हमर अंग भंगी माध्यम रे भी एनकोडिंग हेइ पारिबो हला और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन आउ विभिन्न प्रकार सब हमर एक्सप्रेशन माध्यम रे एनकोड हेइ पारिबो माने कि हम मनर भावना को हमें भाषा माध्यम रे प्रकाश न करिकि जेतबेले एक्सप्रेशन सिंबल्स गेस्चर एगुडा को एनकोडिंग कुआ जाय फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग एन इंटेंशनल मेसेज। ताले हमर को इंटेंशन ना हमें मेसेज पठै दाउ सेटारे एनकोडिंग होता एनकोडिंग हला माने एनकोडिंग को डिकोड करा जाय। नेक्स्ट तापर आछि डिकोडिंग डिकोडिंग मीन्स अटैचिंग मीनिंग टू द मेसेज। ताले एनकोडिंग रे मु मोर वर्ड्स हो सिंबल्स हो गेस्चर्स हो और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन मोर विभिन्न प्रकार एक्सप्रेशन माध्यम रे जो सब मनर भाव को प्रकाश कली ताकू जे बुझी पारिला हला ता अर्थ जहाँ बुझी पारिला ताकू ही कुआ गला डिकोडिंग। ताले डिकोडिंग मीन्स अटैचिंग मीनिंग टू द मेसेज जेतबेले से जो एनकोड माध्यम मु जो कोडिंग करिकी मेसेज टा देइथिली ताकू जेतबेले रिसीवर डिकोड कला बा मु जा कहली मो भावनार अर्थ से बुझी पारिला ताकू ही कुआ जिवो डिकोडिंग हला। डिकोडिंग मीन्स अटैचिंग मीनिंग टू द मेसेज। ताले जेतबेले एनकोडिंग रो मीनिंग जना पड़ी जाए को डिकोडिंग जेतबेले डिकोडिंग मीन्स होची अटैचिंग मीनिंग टू द मेसेज मेसेज रे जेतबेले अर्थ प्रकाश पाए ताकू ही कोंती डिकोडिंग। देन तापर आसुची फीडबैक। सो फीडबैक इज लास्ट पॉइंट होची फीडबैक। फीडबैक इज द reversal of the communication process in which the receiver express the response to the sender's message। ताले फीडबैक रे कौन होता है फीडबैक इज द रिवर्सल रिवर्स मीन्स जे सेंडर थिबा से रिसीवर हबो जे रिसीवर थिबा से सेंडर हबो ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ताले कम्युनिकेशन ऑफ फीडबैक होची गोटे रिवर्सल प्रोसेस इन व्हिच द रिसीवर ताले रिसीवर एक्सप्रेसेस द रेस्पॉन्स। ताले सेंडर आग रिसीवर को मेसेज देला रिसीवर जहाटा बुझिला ताकू वर्तमान सेंडर सुनिबो आ माने कि कहबार कथा होची कि सेंडर वर्तमान रिसीवर हे जिवो आ रिसीवर सेंडर हे जिवो ताले रिसीवर जो रेस्पॉन्स टा दबो सेंडर को दबो से ताकू ही कोंती फीडबैक। ताजी पाई एतिकी थिला हला तो वर्तमान आमे कोन जानिले व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन।